Good morning friends, I am Professor Harsha Gangavani during the lecture of Core Java of unit number 4. In my previous video lecture we just started this new topic whose name is applet. We just learn about the local applet and remote applet and how we can create an applet with the help of some code and the steps for creating an applet. In my today's video lecture, we just discuss about the life cycle of the applet with the example. Okay, so basically what is the applet? Applet are nothing but the small code of the program which is run on the internet. Java provides us the applet viewer browser for running the applet. So we discuss the life cycle of an applet. So applet life cycle having 4 stages. First is a newborn stage. Newborn stage, that is nothing but the beginning stage of the program, or we can say the applet. When we create an applet by using some steps or by using some rules and regulations for creating the applet, this particular first step, it is nothing but the born state. Then start method we call by the system, that means it is a system called method which is load our applet in compiler, so that particular applet will execute it and we got the output by using the applet viewer browser. Okay, then the second step, it is nothing but the second state, it is nothing but the running state which explain the display method. That means whatever you want to display on the applet, those particular portion are written in a paint method, and this particular paint method is responsible for displaying anything on the applet, and this is the second step. Okay, in that step all the information which we want to display on the applet, that will be executed. This state means the running applet may goes on the ideal state with the stop method. That means the particular applet who getting the processor for execution, suddenly this particular processor are left out from that running applet and it will goes on the ideal state. So ideal state means what? The processor means वो applet को processor तो मिल गया है, but suddenly उससे वो processor ले लिया है किसी दूसरे application में. So that time those application are running on the processor, and now this particular applet code not getting the processor yet. So it goes on the stop or ideal state. Okay. For this we have to call the stop method which is provided by the applet package. Okay. After that, if the ideal applet does not get processor for executing again, then it will goes on the next state, that is nothing but the dead state. We also can automatically, means when the applet will execute it totally fully executed होने के बाद भी वो dead state में चला जाता है. That means क्या करेंगे, हम जितनी भी मेमोरी उस एप्लेट ने ली है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. दैट मीन्स द मेमोरी विल रिलीज all the objects occupy the memory which will occupy by that particular applet will release and our memory should be free. जो भी ऑब्जेक्ट्स बने थे उस एप्लेट के थ्रू वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, उतनी मेमोरी स्पेस जो है वो रिलीज हो जाएगी. Then we can also call the destroy method, otherwise it will call automatically when the applet goes on the ending statement. Okay, so यहाँ से ब्राउज़र क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा. बट आइडियल स्टेट में से भी हम स्टार्ट यानी रनिंग स्टेट में जा सकते हैं. when we call the start method, then and then only the particular applet will goes on the start state. Okay, so यहाँ पे भी start state है और यहाँ पे भी start state है. Okay, but this start method initialized or indicate that the applet is initialized. That means when we call the start method at the beginning में जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे या सिस्टम कॉल करेगा, तो सिस्टम वो स्टार्ट मेथड किस लिए कॉल कर रही है, इनिशियलाइजेशन के. ओके, बट यहाँ पे जो स्टार्ट मेथड आएगी, एक्चुअली हम स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ये सिस्टम कॉल करेंगे. तो
जब भी हम ये स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आइडियल स्टेट में से मीन्स जो रनेबल स्टेट में है, आइडियल स्टेट में है, उस एप्लेट को फिर से प्रोसेसर दे रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, देन अगेन द पेंट मेथड विल बी कॉल्ड फॉर डिस्प्लेइंग एनीथिंग on the applet. So those are the 4 steps in the life cycle of applet. That is, first is newborn state, initialized state जिसको कहेंगे, then running state, that means executing state, then ideal state, not working state, and last one is a dead state. Dead state means destroyed, means memory release. Okay, the life cycle containing the methods. First method is init method. Init method, it is nothing but the method which in which we just initialize the applet objects. तो यहाँ पे क्या होगा, all the code which is belonging for initialization, किसके लिए, applet के लिए. तो जितना भी applet के लिए initial stage है, initialization stage है, वो सारे के सारा यहाँ पे लिखा जाएगा. The code which is belonging to initialize the applet. अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का है क्या? यस. तो कौन से ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे? तो those object we are created here which is going to be display at the initial stage of the applet. It means हम GUI की बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एप्लेट जब डिस्प्ले होगी तभी उस एप्लेट में इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लेबल दिखनी चाहिए. If we want to be display text boxes and label on the applet in the initial stage, ठीक है, इनिशियल स्टेज में ही GUI में अगर हमें कुछ कंट्रोल्स को डिस्प्ले करना है, दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. दिस इज नथिंग बट द AWT पैकेज विच हैविंग ऑल द कंट्रोल्स विच आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द GUI, जिसमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारे कंट्रोल्स हैं जिसके थ्रू हम एक ऐसा GUI बना सकते हैं जिससे यूजर का इंटरेक्शन हो. ठीक है, तो वो इंटरेक्शन करते समय इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एप्लेट को डिस्प्ले करना चाहते हो, बट कैसे, जहाँ पे इनिशियल स्टेज में सारे कंट्रोल्स है, दैट टाइम यू जस्ट राइट दिस कोड इन इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स द इनिट मेथड. इनिट मेथड में लिख लो, पेंट मेथड में लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, हम डिस्प्ले तो करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एप्लेट में कुछ भी डिस्प्ले करना है तो हम पेंट मेथड में लिखेंगे, बराबर है. But this paint method provide us the graphics object, and if you want to call those method which is provided by the graphics, then and then only you can call those method in paint. Okay, but initial stage में है तो हम object create करेंगे और वो object यहाँ पे डाल देंगे. ठीक है, तो क्या होगा कि initial stage में, that means when the applet is loaded on the compiler, तभी ये एग्जीक्यूट होके इस तरह से GUI जो है आपका क्रिएट हो जाएगा. देन पब्लिक वॉइड स्टार्ट, ये सिस्टम कॉल मेथड है, बट यूजर कैन ऑल्सो कॉल दिस मेथड फॉर स्टार्टिंग और गेटिंग स्टार्टिंग दी एप्लेट. मीन्स एग्जीक्यूशन जो है एप्लेट का वो अगर स्टार्ट करना है, यू कैन कॉल द स्टार्ट मेथड ऑल्सो. अगेन नेक्स्ट मेथड इज स्टॉप, फॉर स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लेट. इफ यूजर वांट टू स्टॉप द execution of the applet, then and then user can call the stop method. Okay, destroy, ये automatically भी call होता है, means when you goes on the end of that particular program, then this destroy method will automatically call by the system. यानी जितनी भी मेमोरी हमने ऑक्यूपाई की है इस एप्लेट के थ्रू, वो सारी के सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इट लाइक अ डिस्ट्रक्टर जो मेमोरी रिलीज करने का काम करती है, तो ये ऑटोमेटिकली भी कॉल होती है और यूजर कैन कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड ऑल्सो. दिस मेथड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेइंग एनीथिंग, सो दैट वी यूज द पेंट मेथड इन ईच एंड एवरी एप्लेट फॉर डिस्प्ले. अब ये पेंट मेथड जो है वो सिर्फ डिस्प्ले करने के काम नहीं आती है. ठीक है, जो आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है, लाइक AWT के थ्रू हम GUI क्रिएट करेंगे लाइक फ्रेम एंड ऑल, तो मैंने आपको इस तरह का भी एक एग्जांपल आपके नोट्स में डाला हुआ है, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए एंड वो एग्जांपल जो है वो एग्जीक्यूट करके देखिए, ताकि विदाउट फ्रेम, विदाउट एप्लेट यू कैन यूज़ द पेंट मेथड ऑल्सो. पेंट मेथड आप एप्लेट के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट हम इससे बाहर भी, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ऐसा GUI चाहिए, और GUI के लिए एक एप्लेट तो है ही, पर एक कंटेनर का क्लास है कंपोनेंट, और कंपोनेंट में फ्रेम, पैनल, डायलॉग बॉक्सेस ऐसे विंडोज़ है, तो वो सारे विंडोज़ में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं.
That is another example. But when we use that particular thing, like AWT controls हमने यहाँ पे use किए, and if you want to get the interaction with the user with this GUI, हम इस GUI के through interaction करना चाहते हैं, then we will perform some operation on that particular thing. Like हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, and after clicking that particular button we will got the output. हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो आउटपुट किस तरह से मिलेगा, हम इसे क्लिक करेंगे तो इवेंट जनरेट होगा, और वो जो इवेंट है वो इवेंट जनरेट होगा इस प्रिंट पे. ठीक है, तो हम रीप्रिंट नाम की जो मेथड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम उस बटन को क्लिक करेंगे तब भी इवेंट जनरेट होगा और उस तरह का आउटपुट हमें बार बार मिलता रहेगा. सो दैट ऑल्सो कैन बी यूज, मीन्स वहाँ पे भी हम इस तरह से इस प्रिंट मेथड को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ओवरऑल दी लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट. This is first step, this is another step, this is third one, and this is fourth one. Okay, for creating we have to follow some rules and regulations. The first step, we have to include the applet and AWT package here. So this is the first step. Just let's see the example of applet, how we can create an applet with HTML code and without HTML code. So first we will take the example that is nothing but the with HTML code. How we can create an applet? First हमें first life cycle के first stage में जाना है, that is nothing but the newborn stage. And newborn stage you have to follow the rules and regulation for creating an applet. So first step क्या होगी कि हमें दोनों पैकेज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है. Which are the those package? First is a applet and second one is a AWT. After that you have to create the subclass of an applet. So I create here public hello world. This is the class name. Extend is a keyword and applet is nothing but the class name which is belonging from the applet package. After that I just override the method paint public void paint graphics G, and I just call the method which is belonging from the graphics class, that is nothing but the drawString. So drawString having the three argument. First is a string type of argument and second one is x-axis coordinate and next one is a y-axis coordinate. So here I provide 10 and 10 for x and y axis simultaneously, and my string is nothing but the hello welcome to Java. So after that, after completion of this particular code, I have to write the second HTML code. Okay, इतना लिखने के बाद में एप्लेट जो है वो क्रिएट नहीं होगा. ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये आपकी थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ. ओके, अब when we write this code, our applet is never found. हमारी एप्लेट जो है वो अब तक बनी नहीं है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम एप्लेट का टैग इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक एप्लेट जो है वो क्रिएट नहीं होगा. सो हाउ वी कैन क्रिएट एन एप्लेट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो टैग को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो इंक्लूड करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, we have to write the applet tag in between the HTML code. So we have to, ये एक नोटपैड पे हम लिख लेंगे. हमने एक नोटपैड लिखा जिसमें हमने ये फाइल बनाई, ये फाइल लिख ली और इस फाइल को हम नाम देंगे hello world .java. We just save this file, this code with the name of hello world.java. After that we have to compile it. Okay, कैसे कंपाइल करेंगे? by using java c hello world. So it will create our class file. After that we have to write the HTML code. Again open the notepad and write this code HTML head, and you can include all the HTML tag as well as the HTML attributes in that particular code, and then you have to include the applet tag in between the HTML code. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, applet लिखा. We have to follow 3 attributes with the applet tag. हमें उससे फॉलो करना ही पड़ेगा. कौन से 3 एट्रीब्यूट है? कोड जिस
उसका हमें एप्लेट क्रिएट करना है, उस क्लास का नाम और डॉट क्लास. ओके. आफ्टर दैट विड्थ एंड हाइट. जैसे ही हम विड्थ और हाइट लिखेंगे उस हिसाब से हमारा एक विंडो जो है वो क्रिएट होगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विड्थ एंड हाइट ऑफ एप्लेट दिस GUI विल बी क्रिएटेड. आफ्टर दैट क्लोजिंग एप्लेट tag. Okay, then closing body tag and then closing HTML tag. Save this notepad file by using app1.html. ठीक है. हमने यहाँ पर फाइल का नाम क्या दिया है? HTML. हमने इसका जावा एक्सटेंशन नहीं दिया है. We just creating our applet with two extension. First is .java and second one is .html file. अब ये हमारी फाइल जो है वो सेव होगी. उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा applet viewer app1.html. जैसे हम ये लिखेंगे दिस ब्राउजर विल एग्जीक्यूट आवर HTML फाइल. जैसे ही ये HTML फाइल एग्जीक्यूट हुई, यहाँ मिला एप्लेट कोड और जैसे ही इसे एप्लेट टैग मिला वैसे ही यहाँ मिली डॉट क्लास फाइल और वो क्लास फाइल क्या है? So it will create that particular window with the height, width and height which is be provided in a value of width and height in applet tag. जो यहाँ पे होगा उसकी विंडोज क्रिएट होगी. अकॉर्डिंग टू दैट ये x और ये y इसका जो पॉइंट रहेगा वहाँ से हेलो वेलकम टू जावा ये जो स्ट्रिंग है वो ड्रॉ स्ट्रिंग के थ्रू क्या होगा? Similarly, we can use the draw rect, draw round rect, draw oval, draw polygon. इस तरह की जितनी मेथड्स है जो ग्राफिक्स क्लास ने प्रोवाइड की है वो सारी मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Similarly, we can use the fill, oval, fill, rectangle, fill, all the methods which is provided by the graphics class. As well as we can use the set color and set font, get color and get font also here. Okay, so that we can create the applet with HTML code. ठीक है. हमने यहाँ पे दो फाइल बनाए. रिमेंबर वन थिंग, हमने यहाँ पे दो फाइल बनाए हैं. ये जावा फाइल है, ये HTML फाइल है और हमने रन करते समय भी दो फाइल का यूज़ किया है. फर्स्ट जावा फाइल एंड आफ्टर दैट HTML फाइल. अगर हम यहाँ पे HTML फाइल यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट इज़ द सेकेंड मेथड? तो सेकेंड मेथड जो है वो HTML कोड को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो कहाँ लिखेंगे? एग्जैक्टली ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद लिखो या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू इंक्लूड दैट एप्लेट टैग इन कमेंट सेक्शन. तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एप्लेट देन कोड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास, डबल कोटेशन नहीं दिए तो भी चलेगा, फिर भी विड्थ इक्वल्स टू 100, हाइट equals to 100, then closing applet tag, then star mark and close. That means we have to close the comment and this is the second method. Okay. अब हमने HTML फाइल लिखी है क्या? नहीं, हमने HTML फाइल नहीं लिखी है. तो हमारी फाइल कौन सी बनी? जावा फाइल. So you have to save this file by using the extension Java only and then run this file with this code. Hello world dot java. यहाँ पे एक्सटेंशन देना ज़रूरी है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड डिफरेंस व्हेन वी रन द HTML coded file and our Java file which included the applet tag. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम जावा कोड में ही applet tag को इंक्लूड करते हैं. यहाँ पे हमें उसी फाइल का नाम देना होगा और एक्सटेंशन देना होगा जावा. इससे पहले हम जब भी प्रोग्राम को रन करते थे वो प्रोग्राम में हम ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन जो है वो नहीं देते थे. हम ये इतना ही लिखते थे और क्लास फाइल जो है वो रन हो जाती थी जावा की. दिस इज नथिंग बट ओवरऑल द लाइफ साइकिल of an applet with a small example which we create the two files. We included the applet tag within the HTML code as well as we included the applet tag in Java code. This is nothing but the
life cycle of applet, we will discuss the another point, that is nothing but the managing the input and output of IO within the IO package. And one topic which is remaining, that is nothing but how we can pass the parameter through the applet code in the applet. Okay, so we will discuss the this particular topic further. For today's session it is okay, and keep learning, be watching. Thank you.